जल्दी से। Sir, done. Sir, can I tell my answer? नो, दूसरा करो। Okay. मैंने oats खाया है। Sir, यस, pardon? Jagrit, what are you saying? I can't hear you. sir, I was saying we have to subtract in the second and third Yes, question. yes. Okay, sir. Done, sir. Done, sir. Okay, Jagrit, tell me what's your answer for the first question? Sir, 57.64. Huh? 57. 57.64. Is it the same answer that you have got, Abhijit? Yes, sir. Okay. For the second one, Jagrit? Sir, 8.124. Abhijit, same? Yes, sir. Then third one, Jagrit? 9.081. Abhijit, same? Yes, sir. By how much should
32.67 be increased to get 207.034. Do this one now. Sir, done. Okay, wait. Sir, can you listen me? Yes. Okay. Sir. Sir, I am not. Who has done it? Jagrit, you have done it. Sir, yes, sir, I have done. What is your answer? 174.364. 174 364. ओके इसमें क्या समझ में नहीं आया तुम्हें अभिजीत बाय हाउ मच शुड 32.67 बी इंक्रीज इसको कितना बढ़ाएंगे कि ये 207.034 हो जाएगा बाय हाउ इफ आई एम राइटिंग हियर बाय हाउ मच Sir, शुड subtraction. हाँ बाय हाउ मच शुड 2 बी इंक्रीज्ड सो दैट वी कैन गेट 5 तो क्या होगा इसका आंसर अभिजीत Sir will. Yes, sir. अगर मैं लिख रहा हूं बाय हाउ मच शुड 2 बी इंक्रीज्ड टू गेट 5 Sir, sir 3.
ये कैसे आ गया? मैंने तुम्हें टेक्निक पहले नहीं बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आए तो उसको लिखो। हैव आई नॉट टोल्ड, नॉट टोल्ड इट जागृत, द टेक्निक? Yes, sir. Do you remember this technique, what I told, that if such questions are coming in the test, then first take an example, easy example like 2 and 5, and simply think what to be done. Yes, sir. You have. Then what's the use of this class, अभिजीत? जब मैं तुम्हें टेक्निक बता रहा हूँ ऐसे सोचना है। अगर दिमाग कमजोर है या लगता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मैथ, तो मुझे ऐसे टेक्निक ला के सोचना है ना। मुझे तो पता है, पर मैं तो तुम्हारे लिए बता रहा हूँ और तुम उसको याद ही नहीं रख रहे हो। अगर 2 को हम कितना बढ़ाएंगे कि 5 हो जाए, यू नो दैट इट इज 3, तो 3 कैसे आएगा? 5 - 2 करोगे ना। Yes, sir. बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। द सेम थिंग इज टू बी डन हियर। 207.034 माइनस 32.67। तो इसी चीज को क्या मैं रोज 100 बार बताऊं? उसको तुम्हें प्रैक्टिस करना है, खुद सोचना है। जब ये टेक्निक मैंने बता दिया तो टेक्निक का भी टेक्निक बताऊं क्या, कि टेक्निक कैसे लगाना है? क्या डाउट है इसमें? Sir, nothing. Such questions has already been done in the class and I have told you how to understand that. अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हमें कैसे सोचना है? तो हमें दोनों नंबर के पास कुछ रखना है और सोचना है बाय हाउ मच शुड 2 बी इंक्रीज्ड टू गेट 5। इतना तो समझ में आ रहा है कि 2 को हम कितना बढ़ाएंगे, हाउ मच इट शुड बी इंक्रीज सो दैट हमें 5 मिल जाए। तो 3 बढ़ाएंगे। अब ये 3 मेरा आंसर कैसे आएगा? 2 - 5 करेंगे कि 5 - 2 करेंगे? वी नो दैट 5 - 2 करेंगे। तो अगर 5 - 2 करेंगे मतलब बाद वाले में से फिर छोटे वाले को हम माइनस कर रहे हैं। इन द सेम वे हमें 207 वाला जो है उससे 32.67 को माइनस करना है। तो मैथ्स में हमें सब कुछ मगज थोड़ी करना है, टेक्निक लगाना है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन तुमने पहले बहुत सारे कर चुके होंगे। अब तुम्हारा चैप्टर खत्म हो चुका है ना डेसिमल, तो तुमने सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे इस टाइप के। Yes, sir. तो फिर क्या फायदा करने का इतना सारा क्वेश्चन, जब तुम इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो? यहाँ पे कितना आ रहा है? अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है? 7 आ रहा है ना। 14 - 7, देन हाउ आर यू गेटिंग 174.364 जागृत? हाउ द लास्ट डिजिट इज 4? Sir. फिर से करो अभिजीत, यू ऑल्सो। Sir, if there is zero after a decimal, we will remove it. नेवर। Sir, if in it the is sir 340 then you can remove. 207.34. First listen me. If it is 0.340 then you can ignore this, but if it is 0.034 then it is very much important. That will be there only. Oh, here I have not written 0, you mean to say this is left. Sir, I That got what you the want to answer. say? Okay, one second. Here I have Sir, not I got written the 0, answer. isn't it? Okay, Yes, let me do sir, it that again. was. That's my mistake. One second, wait. Sir, can I tell my answer? No, first let me write it first. Maybe Jagrat is right. Let me check. 207.034 it is, and then we have to subtract 32.670, isn't it? And now it is coming 4 here. Okay. Then it comes 6. Now 3. Okay. Now it comes 4. And then 7. And yes, it's right. Okay. The same answer you have got, Abhijit. अभिजीत, तुम्हारा आंसर सेम आया है 174.364 या कुछ और आया है? कुछ तो बोलो। Sir, you said something to me. नो अभिजीत। Sir, I got the same answer only. हाँ ओके, तो सही है। ठीक है, दूसरा करो। Rohit purchased a book for Sir, we also rupees. have to write question. Yes, of course. How will you revise it afterwards?
a pencil for rupees 1.85 and a pen for rupees 27.3, no, 27 point, let us take it as 50. Okay. He gave a 50 rupees note to the shopkeeper. 1 second. Let this be not 50 rupees, 100 rupees. Take this as 100 rupee note. 100 rupees note. Okay, this is 100 rupees note to the shopkeeper. What amount will he get back? What amount will he get back? Now try this one, both of you. Done. Done, sir. Okay, both of you have done. Take the value 2. Jagrit, how much you have Sir, got I other was answer? writing. Sir, I was writing the statements. Okay, no need to require the statements. You can write it afterwards. First, tell me the answer what you are getting. That's all. Sir, Jagrit, I have you? got 46.90. Okay. You want more time, Abhijit? Yes, sir, only 1 minute. Okay. Sir, rupees 46.90. Okay. Let us wait for Abhijit to complete. 0.47 into 5.3 into 0.0. Jagrit, you can do this one till Abhijit completes that question. Sir, I got the same answer.
Okay, then do the next one. Sir, it is correct. I will check that. Till then, you can do this one. That's correct. Sir, I got the answer for this question. Okay, what's your answer? Sir, wait. Sir, एक minute. Hmm. Yes, sir. Yes, sir. Hmm. Can you tell me? हाँ. 0.14946. Okay, let us wait for Jagrit. Jagrit completed. Sir, do sir done. What's your answer? Sir, 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 I'm getting some other answer. Okay, then that's wrong. So share the pic in the Sir, group, Abhijit. sir, I got a Okay, sir. 0.1494600. That's right. If you are writing Sir, that's 2.6 that's or right. you're writing 2.60 or you're writing 2.600000, all are same. I've already told before also. They all have the okay, same sir. value. Sir, it Okay. did not affect the answer. हाँ. Sir, so my is correct. हाँ, yes. Your answer is also correct. Both सर are मेरा same. पहला वाला करेक्ट है. हाँ. ये वाला भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. ठीक है. ऐसे ही करेक्ट करते रहो टेस्ट में, तो फिर मुझे बड़ी खुशी होगी. Now the next question is to be done. If the cost of a pen is 38.50, find the cost of 127 such pens. इसको करो. Sir done. Oh, Jagrit has done. Sir done. Okay, tell me the answer, Jagrit first. Sir, I have also done. Sir, Yes.
488.950. 488.950। यार तुम्हारा क्या है अभिजीत? Sir, now can हाँ, 48.895. 48.895। Sir, 48. हाँ, यही ना 48.895। 0.89. ओके, और जागृत योर्स इज दिस 488। Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ बोथ ऑफ यू शेयर द पिक ऑन माय व्हाट्सएप। Sir, I will take time to send this, sir, because the phone is with my father Okay, both of and the he is answers on are a call. wrong. Try yourself again. I'm giving you one chance more. Both the answers are wrong. Okay. Sir, the decimal. Hello. Yes, sir, the Huh. decimal placement is wrong or the number. That I can't say. You have to try first. Then I will explain. Sir, I got the answer. What's your Sir, I answer? got the answer. Sir, 4889.5. तो पहले गलत कैसे किया? Sir, वो डेसिमल गलत. हाँ, तो डेसिमल तुम टेस्ट में गलत करके आओगे, मतलब फिर मैं आऊंगा चुप करके वहां पे बताने। अभिजीत फिर से करो। मैथ्स में हमेशा क्रॉस चेक करना है। यू हैव टू क्रॉस चेक योर आंसर्स रेगुलरली। ह्यूमन मिस्टेक्स तो होते ही हैं। 5 7 जा 35, 3 कैरी ओवर, 8 7 जा Sir, 56। हाँ sir, I am हाँ, getting 4889.50. then again the same thing you are telling. I already told you that 0.5 or 0.50 is same. Then what's the doubt now? Okay, sir. Now here after decimal only one digit is there. So here also after decimal only one digit should be there. Now here if 38.50 is written, I have straight away written here 38.5, isn't it? Because both are same. So why to add this 0 in multiplication? We can ignore that. Okay. Is that understood? Yes.
इसको करो। Sir, okay. Okay, write this one as your homework. So this may take larger time and share it on my WhatsApp. Okay. Now do the next question I am giving you. Sir, done. What's your answer? Sir, 550.001. 550.001. Is it the answer that you got? Yes, That's wrong. तुम्हारा हो गया अभिजीत? No, sir, doing. सर बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं. हाँ, इसलिए कह रहा हूँ उसको होमवर्क ले लो। Okay, sir. बहुत सारे तो नहीं आएंगे, ये जो 2 0 है यहाँ पर 1 0 और आना चाहिए बस। ठीक है, 3 0 होगा तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। okay, sir. Sir, because there are 4 zeros. हाँ, there should be 4. When you are dividing, how you are doing, I can't see ना. You have to share that on my WhatsApp. What you are doing wrong, I don't know. There are many techniques to solve it, but the answer should be at least the right one. So share the pic afterwards, okay? Sir, Whenever you can. sir, this one is also homework. No, this one you have to do now. One kg of milk has 0.250 kg of fat. How much fat is there in 12.5 kg of milk? Sir, done. Sir, but I am confused to put the decimal in this. Okay, what's your answer? Tell me, Jagrit. Sir, 0, 3, 1, 2, 5, 0, 0, 0. Point is nowhere. Sir, I am confused to put the decimal. Sir, Okay, and your Abhijit? Sir, doing. Okay, take your own time. Sir, I can't understand this question.
Sir, the इसमें decimal मल्टीप्लाई will come करना है कि 0 डिवाइड at करना है, ये भी नहीं after पता तुम्हें? 0. Sir, अभिजीत, decimal will come after 0. ओके वेट, अभिजीत, इसमें तुम्हें मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है? Sir, divide them. क्यों? 1 kg मिल्क में 0.250 है, तो 12.5 kg मिल्क में कितना होगा? तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो डिवाइड क्यों करेंगे? एक डब्बे में अगर 10 चॉकलेट आता है तो 10 डब्बे में ज्यादा आएगा या कम आएगा? तो फिर इतना छोटा तो कॉमन सेंस है, अगर 1 kg में बता रहा है और हमें 12.5 kg में निकालना है, तो ऑब्वियस है कि ज्यादा हो जाएगा ना फैट। 1 kg जो दूध है उसमें 0.250 kg फैट है, ठीक है, फैट एक तरह से चर्बी हो गया समझो। तो 12.5 kg में कितना होगा, दैट्स ऑल, मल्टीप्लाई करो। Sir, you are on mute. Sir, I have muted myself intentionally. I have given you the time to do that, Abhijit. sir, where will the decimal come? I will tell you. Let Abhijit complete it first. अभिजीत, मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लोगे? Sir, doing. ठीक है, करो जल्दी, आई एम वेटिंग। Sir, Sir, I understood where, sir, the decimal will come. Sir, after 03. You mean here? Yes. Okay, let us see Abhijit's answer first. sir, done. What's your answer? Sir, done. बताओ क्या आंसर Sir, आया? 3.125. 3.125. Sir, Now how you 3.125. understood? अब कैसे समझ में आ गया? Sir, I have Jagrit, now how you understood where to keep the decimal? Sir, because we will, sir, 0 and there are 2. Okay, now I will be sharing the homework and you have to complete it today because now you are on holidays, na? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then we will end up for today. Okay, sir. Bye, sir. Okay, bye.